चले हमने लास्ट टाइम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन देम। और जो प्रैक्टिस हम करेंगे इंशाल्लाह वो डायरेक्टली कुरान से ही करेंगे, जितनी भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर देयर आर थ्री सेगमेंट्स, वन ए, बी एंड सी। आई टोल्ड यू ए इज अ मुब्तदा because it starts the sentence. ठीक है, A is a component that's a mubtada because it starts, and mubtada is always rafa Mm. other than harf of nasab case. Yes. ठीक है, that's what we discussed about. We also said that everything we learn, everything before the is considered mubtada. Mm. Mm. ठीक है, now everything before the is से मेरी assumption ये है कि जो हमने 7 पॉइंट्स पढ़े थे, हाउ टू डिटेक्ट इनविजिबल इज, अब जब आपको वो नजर आते हैं तो थिंग दैट्स बिफोर द इज अ मुब्तदा। ठीक है, इट डजंट मीन कि कोई फेल आ रहा है तो कुछ आ रहा है तो वो उसको फेल करना है, पर मुब्तदा इज ऑलवेज इसम्स। ओके, सो you find the invisible is and you see what is before the is and that's your mubtada. ठीक है, that's what we discussed last time. हमने रफा की डेफिनेशन को इन्फ्लेट किया था। हमने कहा कि हमें पहले सिर्फ पता था डूअर इज रफा, नाउ वी आल्सो नो मुब्तदा is rafa. Now we also know that khabar is also rafa, Mm. right? ये चीजें हमने की थी. Now we are applying new labels to the old things that we knew. ठीक है, Mm. तो अब डेफिनेशन इन्फ्लेट हो रही है हल्की हल्की, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हमने खबर पढ़ी थी। हमने कहा बी इज खबर and we said this is always rafa. This khabar is always rafa, and in 95% of scenarios it is common. Mubtada, 95% of scenarios proper. Oh, proper, yes. Okay. So, but you do have cases when mubtada is common and khabar is proper. दोनों केस exist करते हैं ये वाले। When mubtada is made common, वो हम थोड़ा सा आज देख लेंगे। ठीक है, when the khabar is made proper, that has to be a special reason. It is not made proper just like that. Generally खबर को common ही रखा जाता है, and खबर is of course an information about the mubtada which is the subject. ठीक है, that's the subject. um, then we said the third thing, C, which is muta'alliq bil khabar, MBK, right? Now this is an information that is related to khabar. ठीक है, and it is composed of harf of jar, fragment, or an idafa with special mudaf. One of these two. जब भी ये दो आपको नजर आ जाए तो दैट इज अ मुताल्लिक बिल खबर इन योर सेंटेंस। ठीक है, सो दीज आर थ्री फ्यू बेसिक्स दैट वी लर्न। इसके अलावा हमने थोड़ा सा देखा था स्ट्रक्चर्स को, वेरी बहुत ही प्रिलिमिनरी व्यू हमने उस पर लिया था। हमने कहा था कि जी सेंटेंस इज लाइक मुब्तदा, देन खबर एंड देन मुताल्लिक बिल खबर, बट दे कैन स्विच प्लेसेस। ठीक है, इट कुड बी ए सी बी स्ट्रक्चर। ठीक है, इट कुड बी सी ए स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। ये स्विचिंग ऑफ प्लेसेस जो है, इन मोस्ट केसेस इट इंट्रोड्यूसेस एबनॉर्मेलिटी, Mm. और इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अरबिक के अंदर पंक्चुएशंस नहीं है। So how does the language expresses itself without punctuation? It changes the places of the words. ठीक है, तो हम ये स्विचिंग आज थोड़ी बहुत देखेंगे कि व्हाट इम्पैक्ट डज इट क्रिएट व्हेन द वर्ड्स स्विच। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कुरान खोल के, जस्ट सो वी आर ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार।
I'll just randomly open some surah. Let's see. Let's see if we have something which is interesting. Surah Yusuf. Let's try this. चले, we're lucky. फर्स्ट ही आपको कुछ मिल रहा है. तिलका आयातुल किताबिल मुबीन. ठीक है. What I want to do is I want to identify first what type of sentence is this. Is it a जुमला फ़ेइलिया? Is it a जुमला इस्मिया? आपने अभी तक ism based sentence पढ़े हैं. So for you the answer is simple. Fahad bhai, it is either जुमला इस्मिया or we don't care. Hmm. ठीक है. So that's your answer. So I'm giving you a जुमला इस्मिया. ठीक है. Good. And you know it because it starts with a word that you're familiar with. Yes, yeah. ठीक Ism है. ishara. So you found an ism ishara, and once you find an ism ishara, there is what after it? An invisible is. Is. ठीक Yeah. है. So as soon as there is an invisible is after it, you are going to label ism ishara a mubtada. Now you see this is rafa and this is proper, right? Both of them. This is the mubtada. So this is your A. Okay? Then you move ahead. Even if Hmm? दिल का मतलब ओके शायद यस या इट्स रफा एग्जैक्टली या सही होगी क्लियर. ठीक है. Then you found ayatu. Ayatu is an ism that is common right now. If I just look at the ayatu, it's a common ism, right? And we know that when you find ism that's common and that's rafa, that is labeled as khabar, खबर. right? Now you move ahead and you find al-kitabi, and you probably know the relationship between ayatu and al-kitabi. Any ideas? इजाफा. It's an idafa. We Yes. learned that when mudaf ilayh is proper, mudaf becomes proper, Okay. right? Yes. So then we will go back and mark ayatu a proper ism. Okay? Now, this was your khabar. Okay? This was your Yes. khabar. This word itself, when it came as a khabar, was not proper. The mudaf ilayh made it proper, right? It is inherently not proper. Okay? Because, and this, they are all connected together. This is one big bucket. Okay? Now, you have a relationship between al-Mubini and al-Kitabi. Yeah. It's Can we detect masus. what? Mausuf Sifa. Okay? Mausuf Sifa. So, all of this from Ayah to all the way to al-Mubini is connected. Because Ayah 2 was supposed to be your khabar, you cannot disconnect it with its associates, which is al-Kitabi, al-Mubini. You pick up this entire thing and you mark this as a khabar. खबर. Full bucket. Um, Okay? So this is a sentence that is an A B structure. There is no C in it. तो इसमें There- जो खबर है वो प्रॉपर है. इसमें जो खबर है उसको आप प्रॉपर मार्क करेंगे बिल्कुल, बट आपको वो रीजन समझने की जरूरत है क्यों प्रॉपर है वो. इनहेरेंटली प्रॉपर नहीं है. जब खबर को इनहेरेंटली प्रॉपर बनाया जाए देन देयर इज सम स्पेशलनेस गोइंग ऑन. अच्छा वो वाला सही से. ठीक है. सो दिस इज इनडायरेक्ट प्रॉपर. आप यूं समझ लें. ठीक है. सो तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इज अ जुमला इस्मिया. इट हैज अ मुब्तदा and it has a khabar. It does not have a muta'alliq bil khabar. This is a sentence level labeling. If you go one level down, within this sentence you have a mudaf and a mudaf ilay. You have a mawsuf and a sifa. This is one level down. अब आप एक level ऊपर label कर रहे हैं. ठीक है. So now you probably sense that this is a fragment and it's part of a bigger sentence. Right? ठीक है. आगे देखते हैं.
Mm, don't want to give it that one. Okay. Complex है ये. Change the surah. Go to not this. Let me change another surah. अच्छा बताया. Is there a significance, Fahad bhai, of knowing कि जी ये दो तरह के sentences की कि why जी it's जी ismiyah and why it's failure? जी absolutely. I think we Meaning discussed it to briefly in the previous class. Isms are permanent, fails are temporary, okay right? fine They're fine time सही सही. dependent. ठीक है, तो उसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है. और ऑफ कोर्स एक पूरी स्टडी है, रिटोरिक बलागा की स्टडी, कि व्हाई isms आर यूज्ड ओवर फेल्स एंड फेल्स आर यूज्ड ओवर ism. एडवांस अरेबिक में आप ये भी पढ़ेंगे कि isms कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फेल. आप ये भी पढ़ेंगे कि an ism can be used in a way that it acts like an ism. So fail can be used that it acts like an ism. इस तरह की बहुत सारी स्टडीज हैं. उलाइका फी दलालिन बाइदिन. ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई मुब्तदा खबर एंड मुताल्लिक बिल खबर. Laika is pointer. So उलाइका इज अ पॉइंटर. yeah, Is after. but it's a fee. So fee is मुब्तदा what? कौन सा है? मुब्तदा क्या है? लाइका Ulaika. उलाइका. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. अब फी आ गया, तो फी के साथ क्या करें हम? It's a harf of jar. इधर चल तो jar आ गया. Dalalin. तो ये सी पार्ट हमने पढ़ा था कि सी में हर्फ ऑफ जार हो ये सकता सी हो में होता है जी, बिल्कुल. दिस इज जी. सी हर्फ ऑफ जर, व्हिच इज इन अरबिक कॉल्ड, याद है? ताल्लिक बिल बिल खबर. खबर. मुताल्लिक बिल खबर. Yeah. ठीक है, Dalalin. Yeah. तो फी Dalal. का रिलेशनशिप कहाँ तक जा रहा है आगे? Whole. Dalalim baid because Dalalim baid is sifa इज मौसूफ. मौसूफ सिफा. फी Yeah, दलालिन मौसूफ. एंड दलालिन एंड बाइद. So that's one Yeah. big bucket, Yeah. So right? A and So C. you have mubtada and you don't have khabar in this one. You have mutaalliq bil khabar in this one, right? This is the AC structure. ठीक है. हमने कल देखा था, लास्ट टाइम देखा था कि सेंटेंस, इसम बेस्ड सेंटेंस में ए इज मैंडेटरी एंड वन ऑफ द टू मस्ट एग्जिस्ट, ए बी और सी. इन द बेस्ट केस ऑल थ्री एग्जिस्ट. ठीक है, अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये वाली, हुवल अजीजुल हकीम. नाउ इन दिस केस हुआ इज अ प्रोनाउन and after a pronoun is an invisible is. So when you see an independent pronoun, it is mubtada. ठीक है. Then you go ahead, you find Al Azizu, Al Hakimu. Now these are two isms which are inherently made proper. ठीक है. They also match in four properties. ठीक है. So we would be, I mean, driven towards marking them as Mausuf Sifa. But we also know that these are the two names of Allah, Proper. right? We know that, right? Now that's one specialness why they are proper. They're two names of Allah, that's why they are proper. So there's a reason. So they're still marked as khabars. Okay? And you will not mark it as Mawsuf Sifa because there is no Mawsuf here. They both are Sifas. Right? जी बिल्कुल. If the word Allah was there, that would be the Mawsuf. ठीक है? Pointer हुआ itself cannot be a Mawsuf. Doesn't make sense. हमने पढ़ा था, right? So here the khabar is, there are two khabars. There's Al Azizu is a khabar and Al Hakimu is a khabar. You will not mark them Mawsuf Sifa.
when you see Allah's name coming like this without the word Allah mentioned, don't mark them mawsuf sifa. Mark them khabar 1, khabar 2, khabar 3, whatever. Okay. ठीक है? And this So is this when is khabar is जी, proper. this is when khabar is proper. Okay. सही. Um, this is a little complex, but let's try to do this. इसमें तो Um, बहुत नहीं अभी छोड़ दें इसको, कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं अभी आपको एक दो चीजें बता दूं फिर उसके बाद करेंगे. एक और मिल जाए मुझे. कोई बात भी वो हो सकता है जिसमें हम्म कॉम्बिनेशन हो, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो. A is not at the beginning. मैंने वो पढ़ाया नहीं इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं रहा. मैं ओ अभी अच्छा आपको ठीक. अभी मैं आपको वही पढ़ाऊंगा. मैं जिस एक और एग्जांपल ले लूं ताकि थिंग्स आर क्लियर. चले हम पहले पढ़ लेते हैं यार. ठीक है, लेट्स लेट्स डू दैट फर्स्ट. अच्छा, हमने क्या किया है अभी तक. अम, हमने जो फंडामेंटल सेंटेंसेस थे वो देख लिए. हमें एक प्रिंसिपल क्लियर हो गया. अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखने वाला हूं जो कि आपको पता है. हम्म, ये वाला आपने सुना हुआ होगा या पता होगा. आई एम श्योर सुना हुआ. क्या होगा? ठीक है, यू वुड नो दैट. ठीक है, जब नमाज जल्दी पढ़नी होती तो यही सूरत पढ़ते हैं, है ना. तो इन्ना माल उसरी उसरा. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, अब हमें क्या नजर आ रहा है इधर. इन्ना नजर आ रहा है. ठीक है, हमें पता है इन्ना इज अ हर्फ ऑफ Yes. नसब. नस्ब. ठीक है, अब हमें तलाश करना है इन्ना का इसम. जी. राइट, एनी आइडियाज. इन्ना का इसम कौन सा हो सकता है इसमें? थिंक अबाउट इट. इन हमें एक इसम चाहिए जो कि नस्ब में हो. राइट, दैट्स व्हाट वी वांट. सो व्हाट कुड बी द इसम ऑफ इन्ना? पहले तो फर्स्ट वाले को ही कंसिडर करेंगे. फादर मा. अब हमें एक ऑब्वियस चॉइस मा नजर आ रही है बिकॉज इट्स राइट आफ्टर इन्ना एंड इट्स आल्सो नस्ब. राइट, जी. और भी कोई इसम है इसमें नस्ब में? Yusra? लास्ट स्पेशल Yusra? मुदाफ नहीं है ये Yusra. तो. Now this is also in ism, in nasab Yes. state, right? It's also mansub, right? दो ऑप्शन है. अब आते हैं भाभी आपके क्वेश्चन पे. मा. It is my special मुदाफ. It is special mudaf, right? Yeah. And it is a special mudaf, and it is always coming as a mudaf, right? Yeah. So it should have a mudaf ilay, Yeah. right? And we see that Okay. mudaf ilay as well, al usri, Yes. right Yeah. after. So अगर हम इन्ना को का इसम ये बना दें, Yeah. ठीक है, और अल उसरी को इसके साथ कनेक्ट कर दें. हम कहें जी इन्ना इज कनेक्टेड टू मा एंड अल उसरी इज द मुदाफ इलै. हमें पता है इन हर्फ ऑफ नसब जब आता है तो दैट इज अ मुब्तदा. राइट, वी नो दैट नाउ बिकॉज वी आर बिग स्टूडेंट्स. अब जब मुब्तदा आ जाता है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इसम बेस्ड होता है उसमें या तो खबर जो होती है वो रफा होती है या हर्फ ऑफ जर और स्पेशल मुदाफ मुताल्लिक बिल खबर होता है. राइट, Yeah. सो अगर मैंने माल को इसका इसम बना दिया तो क्या मैं मुताल्लिक बिल खबर को इन्ना का इसम बना रहा हूँ, मुब्तदा बना रहा हूँ? इज दैट व्हाट आई एम डूइंग? यू अंडरस्टैंड? नहीं आई नहीं रिपीट. नहीं समझ नहीं आया नहीं. पॉइंट? हमें पता है अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेबल को देखें तो माल उसरी को मुब्तदा खबर या मुताल्लिक बिल खबर इनमें से कौन सा लेबल मिलना चाहिए? हम्म. इसको मिलना चाहिए मुताल्लिक बिल खबर.
मुताल्लिक बिल खबर मिलना चाहिए, राइट? जी क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ के साथ है। जी लेकिन हमें ये भी पता है कि इन्ना के साथ जो इसम होता है उसको कौन सा लेबल मिलता है? हर्फ ऑफ तो वो बी होता है खबर। नहीं, जब हर्फ ऑफ नस्ब सॉरी होता है वो दैट इज सॉरी वो मुब्तदा ए ऑलवेज अ मुफ्त मुब्तदा, मुब्तदा ए ठीक है? या उसको मुब्तदा मिलता है। अगर मैं जी कहूँ मा को मैं इसम बना दूं इन्ना का, तो मैं मुताल्लिक बिल खबर को मुब्तदा में लेके जा रहा हूँ, इज़न्ट इट? यस जी डज इट मेक सेंस, हम्म, राइट? सही So the only choice you are left with is what? युसरा युसरा यस Yusra. ठीक? That's one way of understanding it. The second way of understanding is कि आप अगर माँ को कंसिडर कर लें इसम इन्ना का, तो आपको पता है मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ माँ एंड इन्ना आर मुब्तदा, राइट? नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ खबर। मैंने चले इस पूरे को लेबल कर दिया मुब्तदा, ठीक? नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ खबर एंड खबर सपोज टू बी व्हाट? राफा, रफा right? So what's the role of Yusra? I can't find that role. ठीक है? So it will not work. So as a student of grammar, you are analyzing very deeply on how this structure is operating. Okay? So you are looking at inna and you know that ma'al usri is a special mudaf, so you're going to label it muta'alliq bil khabar. ठीक है? And you also know that harf of nasam tolerates long distance, या या right? So you are going to say this inna and al usran yusran is basically a harf of nasab fragment combined. Clear है यहाँ तक बात? Makes sense, right? Now, in the normal circumstances, I'll just do this. Come on, paste. Copy and paste. ठीक है. In the normal circumstances, a normal sentence structure would have been something like this. Inna yusran ma'al usri. That is absolutely normal because you have a mubtada and then you have a muta'alliq bil khabar, A C structure. But Allah chose to push this word yusra out, creating an abnormality. Okay? Now this mubtada was supposed to come earlier, but it was part of it was delayed. Correct? Right? So when the mubtada is delayed, like this, when the mubtada is broken, ये हर्फ ऑफ नसब के केस में ही होगा और किसी केस में नहीं होगा। यानी हुआ को आप ब्रेक नहीं कर सकते, जालिका को नहीं कर सकते एंड सो ऑन, राइट? ये हर्फ ऑफ नसब का केस बता रहा हूं मैं आपको। व्हेन यू सी अ हर्फ ऑफ नसब केस, व्हेन द मुब्तदा इज डिस्टेंट अपार्ट, यानी दैट इज कंसिडर्ड अ डिलेड मुब्तदा, delayed mubtada. Okay, it's a mubtada that's delayed. Okay, when the mubtada is delayed, this structure which was supposed to be A and C structure, you cannot label it as AC structure. Okay, the first complete thing that is coming is C. Mubtada only gets completed afterwards, right? So you are going to mark it as CA structure, although inna came first. Because the mubtada was not full, you will not mark it full as AC structure. So now that creates an abnormal structure where a mubtada is delayed and muta'alliq bil khabar is brought earlier. ठीक है? MBK is brought earlier. यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जो कि रिपीटेडली हमारे सामने आएगी. When we say the mubtada is delayed, it is called the mubtada is muakhar. आखिर में ले जाया गया उसको.
मुअख्खर, ठीक है? When something is brought earlier, it is made muqaddam. मुकद्दम, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ब्लैक आप खुद फिल कर लें, ठीक है? ये वो जो कदम है ना, ये वही वाला मुकद्दम है, ठीक है? So something that's brought earlier, ठीक है? So now mubtada is, when mubtada is muakhar, meaning delayed, and the MBK is muqaddam, that is an abnormal structure, ठीक है? There are various abnormal structures in Arabic. हम हर structure नहीं पढ़ेंगे, हम दो पढ़ेंगे primarily, दो तीन अभी, ठीक है? So इस केस में होता यह है कि जब आपका मुब्तदा मुअख्खर हो जाए, नॉर्मल मुब्तदा विच इज हर्फ ऑफ नसब और एनी प्रॉपर मुब्तदा मुअख्खर हो जाए और मुकद्दम हो जाए आपका एमबीके मुतालिक बिल खबर, देन दैट then you generally introduce an exclusivity, onlyness in the sentence. Onlyness. There is no word only in Arabic as such, ठीक है? अब अगर आप माल उसरी को देखें, सिर्फ माल उसरी means with difficulty, ठीक है? with difficulty. इन्ना युसरा को देखें आप, वो है indeed is, okay? Inna in yusra is indeed is, ma'al usri is with difficulty. If I take this form, the standard form, and I translate this, I say indeed is, because there is an invisible is with difficulty, right? Indeed is with difficulty, and that's what you find in translations most of the time. Okay, this is what you will find it. ठीक है, मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है, ये मिलता है ना? जी बिल्कुल। But not considering कि मुब्तदा is मुअख्खर and this is मुकद्दम and there is an exclusivity, इसको अरबिक में कहते हैं इख्तिसास, उसको भी आप छोड़ दें, exclusivity, onlyness. Onlyness जब क्रिएट होती है तो इसका मीनिंग बन जाएगा something like this. Indeed is, and just to make a rule of thumb, always translate the mubtada first. अगर वो broken मुब्तदा भी है, मुअख्खर भी हुआ है, bring it together, translate it first. ठीक है, हम इन्ना और युसरा को पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? So indeed is only with difficulty. Okay? Another way of doing that, indeed is with difficulty only, whichever you like. But without only, you have not really translated this ayah. There is an exclusivity here. There is an abnormality here, and there is a reason Allah changes the structure of a sentence from a normal one. Okay? So generally translations, because they intend to give out a simpler message for people to understand, sometimes lose out on these small subtle things which can change the message completely. अब आप इसको एनालाइज कीजिए, indeed is with difficulty, difficulty, ठीक है? Indeed is with difficulty versus indeed is only with difficulty. What's the difference? Indeed is with difficulty only. इससे ये नंबर 1 को आप कंपेयर करें नंबर 2 के साथ, दिस इज नंबर 2, क्या मैसेज मिलता है हमें? क्या ख्याल है? डिफरेंस क्या है? वो ही एक्सक्लूसिविटी वाला एंगल आता था ना फहद भाई के। Do not expect these unless you are gone through difficulty. Indeed is with difficulty. Does that mean कि
Does that mean you can have ease without having difficulty? Yeah. No. इसमें Second, first emphasis one. Oh, This first one. one, yes. First Yes. one. फर्स्ट वन में है Yeah. यही। You can have ease without having difficulty, right? Yeah. What about this one? इसमें आपके पास Yeah. emphasis थोड़ा आ गया कि डिफिकल्टी होगी और उसके बाद फिर ease उसके होगी बाद इसके साथ ही, उसके बाद भी नहीं, उसके साथ उसके साथ सॉरी हाँ मा, ठीक है, बाधा नहीं है इधर, राइट, हम्म, मा है, उसके okay. साथ डिफिकल्टी होगी. So when you will have ease, it means that you will also be going through difficulties. हम्म, You will not see a point in your life where you are not going difficulties, जिसके पीछे हम सब भाग रहे होते हैं कि यार हमारी लाइफ ऐसी बन जाए बस डिफिकल्टीज वाइप वाइप हो जाए. Allah has told us, guys, difficulty is never going to end. So why are we trying to end difficulties? Really? So, I mean, just try to be. Allah says in the Quran, "La in shakartum la azidannakum." If you are thankful to me, I will increase you. ठीक है? So expectation इधर अल्लाह ताला की क्या होगी कि we accept the difficulties, we go through it because we know that this is a trial. है ना? एक तो ये आप देखें, जो विजडम आप इसमें से निकालेंगे जमीन आसमान का फर्क हो जाता है जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द राइट स्ट्रक्चर ऑफ द आया. ठीक है, ट्रांसलेशंस में आप मिस आउट करते हैं इन चीजों को. ठीक, सो द डिफिकल्टी इज ओनली विद ईज. इफ यू डोंट हैव डिफिकल्टी, आस्क फॉर इट कि अल्लाह ताला, इफ यू विल गिव मी द डिफिकल्टी, it will benefit me in few ways. One, I will have an opportunity to pass your trial, so I'll gain reward and ajr. Okay? Two, you will also give me ease with it. If you're not giving me difficulty and only ease, are you not happy with me? Okay. What's the problem? इवन आप देखें जो हमारे फेथ के लोग नहीं भी हैं, दे ऑल्सो गो थ्रू द सेम. नो मैटर हाउ रिच और पुअर, एवरीवन हैज डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ. मनी डजंट सॉल्व डिफिकल्टीज. इट्स द इंटरनल कंटेंटमेंट जो कि आपको अपने दिल से और जहन से मिलती है, ईमान से मिलती है, दैट सॉल्व्स many problems. It gives you the power to live along those side those difficulties, but you can't solve those difficulties really, है ना? It's a very powerful जी आया जो कि Very good. हम रोज पढ़ते हैं तकरीबन, बट इसका जो अंदर इसका जो विजडम है ना, दैट इज डीपली हिडन इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, सो इन नमाल उसरी यूसरा. नाउ दिस इज वन एग्जांपल वेयर द सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंजेस. ठीक है, आगे मुक्त जी. एक क्वेश्चन इस पे कि जब आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज किया आपने और सी ए हुआ तो जो एक्सक्लूसिविटी है वो खाली इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ है या कब कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो वो एक्सक्लूसिविटी के उसमें आएगा? जी, एक्सक्लूसिविटी एक बहुत सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं. एक एक्सक्लूसिविटी होती है, एक स्पेशलनेस भी होती है. ठीक है, सही. ठीक है, तो दे कैन अप्लाई, बट इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको एक्सक्लूसिविटी नजर आएगी. ठीक है, लेकिन स्पेशलनेस भी होती है. और ये वो वाली चीजें जुनैद के ना, ज्यादा हम जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना इन चीजों में, तो हमें नजर आएगी, क्योंकि समटाइम्स योर कॉन्टेक्स्ट विल आल्सो डिक्टेट कि डज इट हैव टू बी एक्सक्लूसिव और स्पेशल. सही. ठीक है, किस बात क्या चल रही है. हम्म, ठीक है, सही. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि हर्फ ऑफ व्हेन when the harf of nasab is a mubtada, it can be broken. It can be broken due to the long distance. अब आपने जो लॉन्ग डिस्टेंस की कहानियां पढ़ी थी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट करता है या नहीं करता, उसकी एक रीजन ये भी थी कि आपने ये समझना था कि मुब्तदा जब ब्रेक होगा तो कैसे ऑपरेट करेगा. ठीक. ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन. ठीक है, due to long distance. Long. In this case, it will be considered mubtada muakhar.
ठीक है, मुब्तदा मुअख्खर. This is one form of abnormal structure. अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और दे देता हूँ इसमें. एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं. I brought few. हाँ, ये बड़ी आपने एग्जांपल पढ़ी होगी. लहुल मुल्कु अस्समावाति वल अर्द. वल अर्द. लहुल मुल्कु अस्समावाति वल अर्द. काफी आता है कुरान में ये अल्फाज, लहुल मुल्कु अस्समावाति वल अर्द. So if you think little bit deeply on this, lahu is, harf of jar, Attached. right? Yes. It's a harf of jar fragment. Lam with the attached pronoun. Okay? Yes. So you can't do much about it. You cannot say what it is right now because it's the first thing that is showing up. It's just independent. And then you move ahead and you say al-mulku. You found a proper ism, which is rafa. And proper isms in rafa are potentially mubtadas. Mubtada. Okay? Yeah. Right. So you go ahead. मैंने लाम गलत लिख दिया इधर, sorry. And you found this to be light. ठीक है? You found this to be light. It's not mulkun, it's mulku. And you found an ism which is potentially a mudaf ilay after it, right? As-samawati. So you say, okay, this al-mulku is mudaf and as-samawati is mudaf ilay. Right? With me on this? Yeah. And because of as-samawati, al-mulku is also proper. Right? जी जी. Then you Is have it the connector. Ji. sorry, Fahad, is it al-mulku or just जी mulku? मुल्क. Just If it is mulku. al-mulku, it cannot be mudaf. Madaf, exactly. हाँ जी. ठीक है? ठीक. See. So now this is made proper because of as-samawati. As-samawat. ठीक है? So we will still consider it a proper ism. ठीक है? And now this is one big bucket, and then you have waw, which is connector. And we learned that when you have a connector waw, the ism after it carries the same status as the previous one. So wal ardi, it's also connected. So this is one big bucket. Mulkus samawati wal ard. Okay, the owner of the heavens and the earth. Okay. Now this, because al mulku is proper, this is your mubtada. Okay, this is your mubtada. So what's the role of lahu? We know harf of jar is usually a muta'alliq bil khabar, right? हाँ जी. मुताल्लिक बिल खबर. In normal circumstances, it should have been mulkus samawati wal ardi lahu, lahu. but it is not. So the structure is changed to CA structure. CA. Okay? So lahu is for him. Mulku is, let's say, हम कहते हैं ownership. Ownership of the heavens and the earth. Yeah. ठीक है? lahul mulku samawati wal earth. हम basically ये कह सकते हैं ownership of the heavens and the earth is for him because there is an invisible is after muftada. That's the normal way of translating if lahu was after. But lahu is not after. Lahu is before. There is an abnormality. Right? So we have to introduce this exclusiveness.
It can be through a word only, it can be through any other word that makes sense. ठीक है? Ownership of heavens and the earth is only for him. You understand? No punctuations in Arabic, only the sentence structures that give you this. Now this is the expression of the language. ठीक है? हम जब पढ़ रहे होते तो हमें नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन जब आप बैठ के उसको अपना माइंड लगा के पॉन्डर करेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। नमाज पढ़ते हुए भी जब तक आप इससे बिल्कुल यूज टू ना हो, आपको ये चीजें नहीं डिटेक्ट की जाएंगी। Why is the imam that is standing and reciting some surah starts to cry? ऐसे तो नहीं होता ना, लोगों को कुछ समझ आ रहा होता है ना, बिल्कुल। ठीक है, कोई इम्पैक्ट होता है ना, तो उसकी रीजन ये होती है। ठीक, सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं, बल्कि पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। अन्ना लहुम, फाद भाई सॉरी, जी आप ये जो आपने कहा था कि जी मुब्तदा को पहले ट्रांसलेट करें, जी जी ये भी रूल है, ये भी रूल है। मतलब इसमें आप ये इस जी सेंटेंस को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ओनली फॉर हिम Is इज द ओनरशिप ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी ग्रामेटिकल प्रेफरेंस ये है कि मुब्तदा को आप पहले करें, लेकिन आप इसको ऐसे सोचा करें, if you are talking to somebody, Quran is a walking, is a verbal message, right? If you're talking to somebody, how would you communicate that message? Think about that. हम ऐसे यूजली नहीं बोलेंगे ना कि ओनली फॉर हिम इज द, तो जितना आप उसको अपनी क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज रखने की कोशिश करेंगे, उतना आप अच्छा मैसेज क्लियरिफाई कर सकेंगे। बट ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट ओनली फॉर हिम। अन्ना लहुम अजरन, अजरन हसरन। अन्ना लहुम अजरन हसनन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। अन्ना के बारे में तो पता होगा, yeah. Harf of हर्फ ऑफ मुतार फेल, हर्फ ऑफ yes फेल yeah तो नहीं है कि हर्फ, जी मजाक करो मैं भाभी, हर्फ ऑफ फेल तो कुछ भी नहीं होता। no harf of mutare something lightest नहीं light नहीं 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 नहीं, आप जिससे कंफ्यूज कर रही हैं वो है अन, oh अन okay लन तो ये तो लिकई ये इजन अन और हता, ना ना है sorry दिस sorry इज yes अन्ना। anna okay अन्ना okay बेन्ना इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लईता लकिन्ना ला, दिस इज हर्फ ऑफ नस्ब। ठीक है, nasab हर्फ okay ऑफ okay नसब। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा सबको कि हर्फ का सही डिटेक्शन कितनी जरूरी है ना, सेंटेंस yes स्ट्रक्चर आपके इम्पैक्ट करेंगे उससे। ठीक है, सो सही अन्ना इज अ हर्फ ऑफ नसब, दैट मींस दैट, अ कनेक्टर दैट। mm. ठीक है, so we need to look for its ism. Any ideas what could be the ism of anna? में अजरन हो सकता है और हसनन हो सकता अजरन। lahum ठीक है, total अजरन का हसनन के साथ कोई रिलेशनशिप है मौसूफ सिफा या मौसूफ सिफा? yeah तो अन्ना का इसम तो एक्चुअली अजरन था, बट अजरन इज टाइड टू हसनन। ठीक है, ब्यूटीफुल कॉम्पनसेशन। mm. ठीक, ब्यूटीफुल कॉम्पनसेशन, एंड दिस इज दैट। नाउ ऑल ऑफ दिस अन्ना and ajran and hasana, this is one big harf of nasab fragment. है। जी ठीक है, क्या ये नॉर्मल लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लिखा हुआ है? मौखर हो गया, मौखर। मौखर हो गया ना, बिकॉज ब्रेक हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया बीच में, so this is made muakhar, so this mubtada is muakhar. And what is the role of lahum in this entire text? so it is attached from lahum, this is with attached. them those Lahum, them for them
क्या चीज है? ट्रांसलेशन से पहले उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करें, क्या चीज है ये? La is harf of jar. हम्म Hum is attached pronoun, so it's जी, harf इज of अ jar. हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, मुब्तदा बिल राइट? खबर, Yes. मुब्तदा बिल Yeah. एंड So it is जी, तो अब हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट का जुमला इस्मिया में क्या रोल होता है? A. नहीं Oh, sorry, नहीं, harf of jar का सी मुतालिक भी खबर. सी Yeah, sorry. सी को अरबी में क्या कहते हैं? मुतालिक बिल खबर। मुतालिक बिल खबर. मुताल्लिक बिल खबर, ठीक है। नाउ अन्ना अजरन हसनन इज मुब्तदा मुअख्खर, A. Yeah. लहुम इज मुताल्लिक बिल खबर मुकद्दम, Yeah. राइट, ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। अब आपने अपने इमाम के पास फिर जाना है, ठीक है। आपने कहा इमाम साहब, यू नो मरफू मंसूब एंड मजरूर, यू आल्सो नो मुब्तदा मुअख्खर मुताल्लिक बिल खबर मुकद्दम, व्हाट डू यू थिंक? सही है। Yeah. अगर उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन किया तो हम शायद फिर खुद ही मस्जिद जाना छोड़ दें. आप उन्हें कहें ला और फिर वापस आ जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज मुताल्लिक बिल खबर मुकद्दम, and then it's a mubtada muakhar as well, so it's an abnormal structure and CA structure, ठीक है। that that beautiful compensation या reward for them is for them. Is this the correct translation or there is something missing? Only only is only Exclusivity is it's missing. only for them. is Is only for only them. for them, right? Only for them. Anna lahum ajran hasan, ठीक है। अब आपने दोनों तरह से ये केस देख लिया कि जब हर्फ ऑफ नसब होता है या नॉर्मल इसम होता है मुब्तदा, द वे नॉर्मल इसम shows up as a delayed मुब्तदा, it is just written after, because उसमें कुछ ब्रेक नहीं हो रहा था बीच में। Harf of nasab is because it's composed of two things, a harf and the ism, it shows up as broken. ये दोनों केसेस मुअख्खर की केसेस ही हैं, ठीक है। अब यहाँ मुल्कों की जगह आपका जालिका भी हो सकता है, हुआ भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वो ऑल द थिंग्स दैट यू लर्न इन फाइंडिंग द इनविजिबल इज, could be anything, ठीक है। So as we go along and do more and more Quran practice, these things will show up. But I think you now understand this whole idea. ठीक है। So generally इख्तिसास इंट्रोड्यूस होता है मीनिंग एक्सक्लूसिविटी, but you also has specialness sometimes. Context dictates it. स्पेशलनेस आप ये कह सकते हैं कि अजरन इंडीड द ब्यूटीफुल रिवॉर्ड इज स्पेशली फॉर देम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओनली, ठीक है। सो इस तरह की भी ट्रांसलेशंस आपको मिलेंगी। ये दो प्रिंसिपल्स हैं, एक्सक्लूसिविटी एंड स्पेशलनेस, जो कि इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं अगर वो इसको कंसिडर करते हैं। वैसे जनरली नजर नहीं आता ट्रांसलेशंस में ज्यादा इस तरह का इस्तेमाल, ठीक है। So they tend to skip it because it's easier to translate. और उसकी वजह ये भी होती है कि many times अरबिक का पूरा कॉन्टेक्स्ट उर्दू में या इंग्लिश में पैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इट्स नॉट इजी, इट टेक्स। अब आप देख लें अन्ना लहुम अजरन हसना कितने वर्ड्स हैं और यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, ठीक है? तो अरबिक इज अ वेरी रिच लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ, लेट्स सी हाउ यू टेक इट। अब आप बड़े स्टूडेंट्स हो गए ना थोड़ा सा, यानी यू सीनियर्स, ठीक है। मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा, तो लेट्स सी के हाउ दिस वर्क्स फॉर यू। मैं कहता हूं अ मैन फ्रॉम कराची, ठीक है, अ मैन फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची, इज दिस डिस्क्राइबिंग द मैन, गिविंग लिटिल बिट मोर Yes. इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन, Yes. ठीक है। Yeah.
इसको मैं इस तरह भी पुराने दौर में जब मैं छोटा सा था तो मैं लिख सकता था कराचीआइट मैन, राइट, या लाहौरी मैन, whatever you prefer. That now this was a mausoof, man was mausoof and Karachiite was a sifa, right? But आपको इसको इस तरह भी रिफ्रेश कर सकते हैं, right? A man from Karachi, अच्छा, a student from um, a student from Pakistan, a doctor in hospital, and so on. Now, this in hospital from Pakistan, from Karachi, this is little bit of an extra information about a doctor, a student, a man, a student, right? जी Now, it is kind of its sifa, isn't it? It's describing it. Agreed or not? Yes? Yeah. Um, Rajulun, a man, ठीक है? Min London. Londona. Why not Londony? Any idea? Because it's the partly flexible. It's partly flexible. It's a proper name of a place and it's a Place. partly flexible ism. ठीक है? Rajulun min London. ठीक है? A man from London. ठीक है? अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे ब्रेक इन द चेन भी हो रहा है, जी राइट? तो मैं तो यहाँ इज लगाने वाला हूँ, ठीक है? मेरा माइंड ऐसे भी काम कर रहा है, यहाँ ब्रेक इन द चेन है, मुझे यहाँ इज लगाना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ इज लगा दिया तो मुझे ये बताया गया है कि जो मुब्तदा होता है विच इज दिस, इट्स ऑलवेज प्रॉपर, ठीक? जी मुब्तदा इज ऑलवेज प्रॉपर एंड आई विल नॉट फाइंड इट एज अ प्रॉपर मुब्तदा। मुझे ये बताया गया था रेयर सर्कमस्टांसेस में एज अ कॉमन मुब्तदा भी आता है, ठीक है, बट आई हैव नॉट लर्न दैट येट, ठीक है? मुझे अभी ये पता है कि मुब्तदा प्रॉपर है, ठीक है? और मैं अगर यहाँ पे इस लगा दूं तो मसला ये होता है कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ सिफा टू दिस वर्ड min London. जी It is giving me a little bit more information about Rajulun. So grammarians जो हैं Arabic के, इस पॉइंट पे जाके they get confused. Should we mark Rajulun a mubtada or not? And now compare this scenario with this scenario. Ar-rajulu min London. जी इसमें ठीक तो है, हाँ जी इजी इस पे प्रॉपर है चीजें और सब कुछ क्लियर है, ठीक है? This is clear case. Now I द can put मैन इज invisible is a man is from London. ठीक है? अब मैं यहां पे अगर is लगा दूं और यहां पे भी is लगा दूं तो फर्क बन जाएगा सिर्फ द मैन और अ मैन का, राइट? लेकिन ग्रामेरियन कहते हैं कि दिस पार्ट इज डिस्क्राइबिंग द मैन, ठीक है? बिकॉज इट्स डिस्क्राइबिंग द मैन यू कैनॉट मार्क दिस रजुलू एज मुब्तदा, अदरवाइज वो जो प्रिंसिपल है डिस्क्रिप्शन का वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने उसको सेंटेंस बना दिया, राइट? So up the point is with the second one we know the man is from London, is from London. If I say Rajulun min Londana is a man from London, Ar-Rajulu min Londana is the man is from London. How should I say a man is from London? That's where I'm stuck. Problem statement clear है आपको? जी ठीक है?
How should I say this? A man is from London. यहाँ पे is कैसे introduce करें? ठीक? So what grammarians do, they say, okay, when you have such a case, because ये वाला जो case था, this was more like a मौसूफ and सिफा case. It's more complex sifa than just one ism. ठीक है? So let's leave it like that. Don't touch it. In this case, what we will do is we'll pick up this word, which is supposed to be a potential mubtada, and we move it in the end. Okay. ठीक है? So they say when you find an ism in Rafa that is common and it is delayed, muakhar, Oh, ठीक है? Then we consider it a mubtada. But we will not consider it delayed because it requires delaying. We will still consider it a normal sentence structure. We will not consider it an abnormal structure because there is a need to delay it. Okay? So in this case, they will just translate this as a man is from London without introducing exclusivity. What I've just told you, we'll do that in the next class again, inshallah. So what I've told you is when the mubtada is common, it is supposed to be delayed. oh, common mubtada. Sahi. When the mubtada is common, it is supposed to be delayed. You cannot have a mubtada that's common and it is in the normal place. Okay? But this is not an abnormal structure. This is not a CA structure. This is still an AC structure. इसकी कुछ एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे मजीद. अभी ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने आपको और बताया तो. ठीक है, ठीक है जी, ठीक है. चलें. कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? नो, अभी तो नहीं. चलें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह you. मिलते हैं फिर नेक्स्ट जज़ाकल्लाह संडे. खादिम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.